नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि स्माइल और व्हील्स है मोबाइल मेडिकल यूनिट MSD फार्मास्यूटिकल्स और स्माइल फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू की गई है। यह पहल उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट से 3 वर्षों में 2 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। हर यूनिट में योग्य डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बुनियादी जांच और मुफ्त OPD सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह पहल 2021 से वाराणसी, गोरखपुर और बहराइच जिलों में भी जारी है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की जागरूकता के साथ साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाना है। माना किया गया है जो हमारे पिछड़े जनपद हैं वहाँ जाकर के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य की जानकारी के साथ साथ जांचें और निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करेंगी। उस पर MBBS चिकित्सक तैनात रहेंगे, नर्सेज रहेंगी और जच्चा बच्चा के साथ साथ जितनी भी प्राथमिक आवश्यकताएं हेल्थ केयर की हैं उनको प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं MSD और स्माइल फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सीधे अब आपको कैनेडी स्पेस सेंटर से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अंतरिक्ष में भारत के लाल जो है शुभांशु शुक्ला स्पेस सेंटर पर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही क्षणों में जो है ये स्पेस सेंटर से जो है लॉन्चिंग की जाएगी एक्सियोम 4 की। ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर से। लाइव तस्वीरें अंतरिक्ष में भारत ISS मिशन पर सुधांशु शुक्ला। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift. For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. Plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. Stage 1 throttle. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight Impact show abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just heard the call out for MVAC chill. We're going to trickle just a little bit of liquid oxygen now into the turbo pumps on board our Merlin vacuum engine on stage 2 in preparation for second engine start 1, which will of course be shortly after stage separation. Now, at this point, we are just about 30 seconds away from 4 events that are going to happen in rapid succession. The first one will be main engine cutoff, or MECO, then again followed by stage separation, ignition of that second stage engine, which we are already Stage 1 preparing Bravo. for, as well as the first stage's boost back burn. With that confirmation from Mission Control that we are throttling the first stage engines down, we are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events.
incredible views on our screen here too, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy, from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you have on your screen right now is our MVAC engine burning for that second engine first burn. We're expecting that SECO here, second engine cutoff, which will likely be called out over the nets as SECO in just a couple of minutes. Stage 1 boost back shutdown. Confirmation that the boost back burn on our first stage booster is now complete, and the booster is heading back toward the Florida coast to attempt a landing at LZ1. At this point, stage 1 is actually still coasting to apogee. We're about to deploy those grid fins so that we can steer the vehicle as it enters the Earth's atmosphere. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. And that call out from Mission Control means Dragon that copies, nominal trajectory. everything is right on track. T+4 minutes, everything continuing to go well, and we've got our first view of the crew. They're inside Dragon, second stage continuing to fire. Right now, second stage, just a little bit more than 1 G. There's so much propellant that even with a 220,000-pound thrust engine, it takes a while before the G loads start to build up during the second stage flight. Meanwhile, first stage continuing to coast up to apogee, and actually now, as you can see on the bottom left of your monitors, we have begun coming back down. It takes a couple minutes to go up, a couple minutes to come back down. That first stage heading back to landing zone 1 at Cape Canaveral. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Words we love to hear. Dragon copies, nominal trajectory. Peggy Whitson echoing back the call up from the ground. Now our next major event coming up will be in about 1 minute and 10 seconds. That's going to be the entry burn. That's where we're going to light a single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about 1 minute later at T+7 minutes and 19 seconds. Now for that one, we actually light 3 engines again. Then quickly once we've kind of jammed the brakes on, then we'll turn off 2 of the engines. We'll be down to just a single engine. Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn. Stage 1 entry burn startup. That we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. There you just saw on the left-hand side of your screen that first stage entry burn shutdown. Right now on your screen, we've got great views of our second stage and take our AX4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS Dragon safe. copies, nominal trajectory. Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ1, of course, is the site of the first successful landing attempt, and hopefully it will be the second time that this particular booster sticks its landing. Seeing those actuating of the grid fins that John mentioned. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 FTSS safe. Stage 1 landing confirmed. That was a picture-perfect landing. That was great. Absolutely stunning.
coming up next for our crew, now that we've confirmed that booster touchdown, is going to be second engine cutoff, also called out as SECO. Then the second stage will coast for a few minutes until Dragon is commanded to separate from the second stage. There's our AX4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. Good continued burn from our second stage engine there. Now at this point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon, Shannon. There's confirmation Copy, Shannon. of the Shannon abort mode. MVAC shutdown. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like to set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. The benefit of every human, everywhere. Over to you, Chip. Launch escape system disarmed. 10 minutes into flight. Water ride. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Chuck. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibault. Stanisław, 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4!
And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew Dragon SpaceX. announced today. And we thank you all as well. And so with today's successful launch of Axiom 4, the teams at NASA's Johnson Space Center will International Space Station over the next 28.5 hours. तो आप देख सकते हैं कि एक्सियम 4 जिसकी लॉन्चिंग की लंबे समय से प्रतीक्षा थी, आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है और भारतीय समयानुसार 12:01 पर इसकी लॉन्चिंग की गई है। इस अंतरिक्ष विमान में जो है 4 यात्री सवार हैं, जिनमें लखनऊ के भारत के शुभांशु शुक्ला भी एक हैं जो अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, जो इतिहास रचने की तैयारी में हैं। वह 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को घोषणा की थी कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS ले जाने वाले एक्सियम 4 मिशन के लिए प्रक्षेपण 25 जून को होगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो है नासा से कैनेडी स्पेस सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां से इस एक्सियम 4 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है। सफल लॉन्चिंग इसकी हो रही है और ये जो है 26 जून को कल पहुंचेगा अंतरिक्ष में, जहां पर कई सारी चीजें जो है वो एकत्रित करेगा, संकलन करेगा कि क्या अंतरिक्ष में जीवन यापन है, क्या पानी है, क्या हवा है, क्या ऑक्सीजन है या नहीं। इन सभी पहलुओं को लेकर जो है ये रिसर्च जो है लगातार जारी रहेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सियम 4 मिशन के लॉन्चिंग की। इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। 28 घंटे की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान गुरुवार को शाम करीब 4:30 बजे के करीब जो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से डॉक होने की उम्मीद है। शुभांशु शुक्ला जो कि वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं, वो इस मिशन का हिस्सा बने हैं और वे दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष की उड़ान पर है। इससे पहले जो है राकेश शर्मा 1984 के मिशन के बाद जो अंतरिक्ष में 1984 में गए थे अंतरिक्ष पर, और उसके बाद जो है शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष की उड़ान पर हैं।